Welcome to Inside India. This is Shekinah bringing you the latest updates and insights across the vibrant nation. Let's get started. BJP National President and Union Minister JPNI shared his experiences during the Shadi Navratri, stating that he felt fortunate to receive the blessings of Ma Naina Devi. He expressed that the darshan of the Mother Goddess imbues him with the new energy to work for the welfare of the society and the nation. Nadda emphasized that they sought blessings for the peace and prosperity of the country, aspiring to contribute to Prime Minister Modi's vision of a developed India, Vikasit Bharat. Iris, Iris, please. कोई बात नहीं। 3.45 लाख करोड़ ये किसानों के खाते में मोदी जी ने डाल दिया है, किसानों के खाते में। और वेस्ट बंगाल के किसानों में वो भी शायद 40 लाख से ऊपर है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी भी मैंने शुभेंदु दा को बोला है, सुकांत मजुमदार जी को बोला है कि आपके पूरे किसानों की संख्या दिल्ली नहीं पहुंची है, उसका वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि उसका वेरिफिकेशन हो, ताकि मोदी जी जो अब 19वीं किश्त दें तो उसमें वो किसान भी जुड़ जाएं और उनके भी खाते में ये 3.45 लाख करोड़ के साथ साथ 2-2 हजार रुपए उनको भी मिल जाए, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं यहां एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आया हूं तो सुबेरे से पत्रकार पूछ रहे थे आरजी कार, आरजी कार, आरजी कार, आरजी कार। मैं यहां यह कहना चाहता हूं सबसे पहली बात कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इसी हॉल में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लॉलेसनेस है, जंगल राज है। आप बताइए, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ यहीं बंगाल में, आज दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? If a person like me who has been given security, if he is not secure, तो कॉमन मैन की क्या बात की जाए? आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स का ब्यूरो के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। आप सबसे ज्यादा महिलाओं पर क्राइम, सबसे ज्यादा महिलाओं की ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, सबसे ज्यादा जिसे हम कहते हैं कि उनके साथ रेप्स के केसेस, सबसे ज्यादा बंगाल नंबर 1 पर। और ममता जी बोलती हैं कि Congress leader and leader of opposition in the Maharashtra Assembly, YADAV'S, commented on the recent election mode in Haryana, noting a one-sided support for Congress. He emphasized that no leader should publicly claim the chief minister's post before elections, stating that the painful defeat in Haryana has taught them this lesson. YADAV'S urged his party members to focus on uniting to remove the mahati government from power, asserting that aspirations for the CM post should take a back seat with the महाविकास आघाडी coalition. काल मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यामध्ये असं कळतंय की काही वाद झाला, अजितदादा लवकर निघून गेले, मुख्यमंत्र्यांची काहीतरी चर्चा झाली। महायुतीच्या सरकारमध्ये हे वाद आता नेहमीचेच आहेत। प्रत्येक कॅबिनेटमध्ये वाद होतो आहे। हा वाद राज्याच्या हितासाठी नाही, तर मंत्रिमंडळातील वाद हा स्वतःच्या हितासाठी आहे, स्वतःच्या स्वार्थासाठी हा वाद तिकडे सुरू आहे। आणि 80 निर्णय पैशात तिजोरीत पैसा नसताना घेतले जातात। यांना कुणाची चिंता आहे? या राज्यामध्ये गेल्या वर्षभरापासून एकेका सचिवाकडे 2-2 चार्ज ठेवले। यांना मागासवर्गीयाची चिंता आहे का? सामाजिक न्याय विभागाला पूर्णवेळ सचिव नाही, बहुजन कल्याण सारखे 52% हिस्से असणाऱ्या खात्याला सचिव नाही, कृषी विभागाला सचिव नाही। 4-4 वर्ष झालेत मर्जीतील सचिवांना बसवून
या सरकारने तिजोरीची लूट केली, स्वतःचा स्वार्थ साधला. अशा सरकारला जे महत्वपूर्ण आहेत, लोकांच्यासाठी जे खाते आहेत त्यांना पूर्ण वेळ सचिव देता येत नाही. तर हे सरकार चालवत आहे कुठल्या दिशेनं आणि कुठल्या लायकीनं चालवत आहे हे महाराष्ट्र बघतो आहे. अर्थविभागाशी निगडीत अनेक विषय काल होते आणि तरी अजितदादा निघून गेले. कुठेतरी जमिनी जे संस्थांना तडकाफडकी दिल्या जातात अशी त्यांची नाराजी आहे. नाही, असं हे त्यांना बाजूला सारण्याचे पुरेपूर प्रयत्न कदाचित असावे. अजितदादा अनेक वेळा वित्त खात्याचे मंत्री राहिलेले आणि त्यांनी काही का प्रमाणात असे ना थोडं शिस्त पाळण्याचं काम त्या फायनान्स विभागामध्ये केलं. परंतु अलीकडे शिस्त बिघडवून काम सुरू आहे. आपल्या तिजोरीत पैसे किती आहेत आणि खर्च किती करावा याचं कुठलाही ताळमेळ नाही. पैसे नसताना JR काढले गेले आणि हे केवळ निर्णय यासाठी घेतले की टक्केवारी मोजण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेतले. काल 80 विषय कॅबिनेटमध्ये होते. आता हे सगळं पाहिल्यानंतर राज्य कुठल्या दिशेनं जात आहे हे महाराष्ट्राला कंगाल करून सोडतील. हा तो जाता जाता जेवढं मिळेल तेवढं लुटून महाराष्ट्राला कंगाल करण्याचा त्यांचा तो प्रयत्न आहे. त्यामुळेच अजितदादांनी कदाचित तिथून काढता पाय घेतला असावा असं मला वाटतं. महायुतीमुळे अजितदादांनी काढता पाय घ्यावा यासाठी राजकीय खेळी पण आहे. Junior doctor Sunanda Ghosh reported that 9 doctors, including 7 from Kolkata and 2 from North Bengal, were on hunger strike, with one colleague, Aniket Mehto, experiencing severe health deterioration after 120 hours. Due to his critical condition, he was transferred to Arjika Hospital. Ghosh expressed frustration over a recent meeting with the Chief Secretary of West Bengal, noting that while they had hoped for a productive discussion regarding the demands, they only received vague verbal assurances. She stated that the officials seemed unwilling to engage meaningfully, suggesting they might look into the issues only after the festival, despite the ongoing suffering of their colleagues. The doctors were asked to call off their hunger strike without any concrete resolution to their demands. The Jayaprakash Narayan International Centre JPNI in Uttar Pradesh has been resealed and barricaded, with police forces deployed ahead of Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's scheduled visit. In response, BJP national spokesperson Pradeep Bhandari criticized Yadav, claiming he is engaging in political maneuvers. Bhandari pointed out that the notice issued indicates the construction at JPNIC is incomplete, suggesting that if Yadav had genuine intentions, he could have paid tribute to Jayaprakash Narayan in his office instead. He further asserted that the SP has strayed from Narayan's ideals, particularly by allying with the Congress party. Following the defeat in Haryana, Bhandari claimed that the entire India alliance is resorting to political stunts as the public decides the ideals of Jayaprakash Narayan to be upheld by Prime Minister Narendra Modi. He highlighted Narayan's anti-emergency ideology, stating that Yadav has overlooked this by foregoing an alliance with Congress. वो स्प्रेड है, इन सीट्स भी हो सकती हैं इनकी वजह से. ऐसे में अखिलेश यादव जी को जाना वहाँ पे ठीक नहीं. आप कैसे देखते हैं?
देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। अगर उन आइडियल्स को फॉलो करती तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती। आज इशू यह है कि हरियाणा की बुरी हार के बाद पूरा का पूरा इंडी अलायंस पॉलिटिकल स्टंट करने पे आ चुका है। उनको समझ में आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। एंटी इमरजेंसी आइडियोलॉजी थी जयप्रकाश नारायण जी की। अखिलेश यादव जी तो वो भूल गए और कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर गए। समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी इंडी अलायंस को, उनके जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी को, हरियाणा के अंदर बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भले वो कांग्रेस हो गई, भले अखिलेश यादव हो गई, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि आने वाले बाईपोल्स के अंदर वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। इस हार पे से अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक के बाद एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे। यही अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के अंदर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो गई। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियाज में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया? ठीक है। देखिए, अखिलेश यादव जी गेट कूद के जाएं, गेट का ताला तोड़ के जाएं या कानूनी रूप से जाए, ये उनका डिसीजन है। कानून अपना काम करेगा, परंतु एक सच्चा नेता जो जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास सच में अगर रखता है तो वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर ही नहीं सकता। Andhra Pradesh Minister Kolsupad Sardi has officially assumed responsibility for the Information and Public Relations (INPR) department at the Andhra Pradesh Secretariat. This marks a significant step in his role within the state government as he prepares to oversee communication and public engagement initiatives. दुर्गा इतिसे अम्मा दुर्गा In response to the Karnataka government's decision to form a special investigation team (SIT) to probe alleged irregularities in medical purchases during the COVID-19 pandemic, T.B. Jayachandra, Karnataka special representative in Delhi, stated that whether BJP ministers or officers are involved in irrelevant. He highlighted that significant funds were allocated to combat the pandemic and pointed to a public accounts committee report indicating mismanagement.
Jayachandra noted that this report was reviewed by retired High Court Judge Michael D. Kunha, who provided details findings to the Cabinet. He emphasized that it is the Cabinet's responsibility to investigate the matter and take appropriate action. So regarding the caste census report, you see your party has a lot of Vikliga and Lingayat leaders as well. They are in a back foot now saying that this report shouldn't be released at all because there are these certain communities who are feeling insecure about it and your government says it must be done. No, when this matter came before the cabinet, I was then the law minister and deliberated much and discussed much about this. This is a report. This report is socio-economic and studies. Socio-economic studies has not been done in Karnataka. Somewhere it is in 1931, it has been done at the Maharaja's period. After that, it was not at all done. Our unanimously cabinet has taken a decision. See how at this stage, when we have reached about 75th of independence and all these things, and we have decided how much benefit has gone to the rural masses. Whichever the community they belong, there is a different thing. And we want to assess. Government wants to know. And it helps the government to make programs. That's how the study report was organized and it was done by the Kantraj Commission. He was heading that. He was a senior advocate and he was a responsible man. And under his leadership, government was able to spend about more than 160 crores for this study report. When we are in power, the matter was not complete. I was totally handling this issue. Then there was a little delay at Bangalore. They are not able to come out with figures. That's why it was delayed. Subsequently, the report was not accepted at all. Now our government has come. We have got a very moral right, moral responsibility to accept that. Let us see what is there in it. Let us see what is there in it. Nobody knows what is there in the report. Now everyone started talking about it. Without matter is being placed before the public, let it be discussed. And the government departments, in my view, they can take advantage of the state report, the statistics in the report, and you can make programs for that to really to help the needy people. That is the socio-economic studies was not at all done. Unfortunately, it was labeled differently, and there is a public they are disturbed with that canvassing. So now what I say, let us see, let the report be placed, let it be opened, let it be discussed. If there are any good points, and certainly there will be good points for the government to take it, to make the programs, and don't politicize. My request to all, whether Karnataka, whether Congress or any party, don't politicize this issue. The Kerala Assembly has unanimously passed a resolution opposing the One Nation, One Poll initiative, prompting a response from BJP leader N. Ramchandra Rao. He criticized the Kerala's government's decision, stating that it reflects poorly on federalism. Rao argued that opposition governments are resisting any central decisions, suggesting that the Communist Party prioritizes its political interests over national concerns. He asserted that the opposition to One Nation, One Poll stems primarily from its association with the BJP-led central government, labeling such an attitude as detrimental to the principles of federalism. The Kerala government decision to pass a resolution in the assembly to oppose the One Poll, One Nation, One Poll is something
which is not in a good taste in a federalism. When the government of India takes a decision, earlier also the government of India has taken decision on amending the Citizens Amendment Act to bring in the NPR, but some states who are opposed to Bharatiya Janata Party have passed resolutions in their own states, thereby scuttling the process of collecting the information on various people, various sections of people with regard to their economic status, and also giving citizenship to certain people who have been persecuted in their countries and they came to India as migrants. So the opposition governments, mainly the Congress and the Communists, both alike, are opposing any decision taken by the central government. They want to oppose it only for the sake of opposition. In fact, the Communist Party has less national interest than their own political interest. So one nation, one poll is being opposed by Kerala government only because it has been brought by BJP government at center. So therefore, this type of attitude of any political party or any government, any state government, is not good in federalism. 11:30 At least now sense should prevail in Bank the government of Kerala, in their leaders, and they should again to take back and recall that particular resolution which has been made in the Kerala Assembly. Brown rice and Congress always misleads the people. It lies to the people. And sometimes they are caught in their own contradictions. When the Haryana debacle took place, their leaders went to media and said that they lost because of EVMs. They lost because of the Tantra and not Lok Tantra. Akhilesh Yadav expressed concern that the government is attempting to conceal something by erecting a tin boundary. He questioned why they are not allowing tributes to be paid to a great leader, stating that this obstruction is not in new orleans. Yadav noted that every year on Jayaprakash Narayan Jayanti, members and leaders of the Samajwadi Party gather to honor him. He further asserted that the current structure is not under construction, but rather it will be sold. ठीक है, हाँ लगाओ। आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ देखिए आपके आने से पहले टीन लगा दिए गए हैं, यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी देखिए ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNI, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन,
1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद अखिलेश जी, कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी तरफ से रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो यहाँ आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर, पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई नहीं है, इस वजह से जाने की अनुमति नहीं मिली। अरे इस बार क्या आप सरकार को नहीं जानते, आप सरकार को समझ। Narayan Togas from SP Nagar revealed that in the morning, a son contacted the police expressing concern that neighbors had reported no movement from his parents from the past 2 days. He feared they might have taken some extreme action. Upon reaching the location, the police conducted a search and discovered the couple's bodies inside a tank. A post-mortem will be conducted and a suicide note found on the wall suggests that the incident may be linked to a family issues. ये इनके भाई है क्या? कोई साहब चेहरे भाई साथी हो? 3 है, एक दम हाँ हाँ, 3 सारे एक है। The city of Gandhinagar came alive with vibrant celebrations on the 8th day of Navaratri as thousands of devotees gathered for the grand mahati, taking place at prominent temples and public places. The event honored goddess Durga dressed in colorful traditional attire. Attendees enthusiastically participated in the prayer ceremony, accompanied by devotional songs and the rhythmic beats of drums. The mahati, a key aspect of Navaratri, is performed to seek the goddess' blessings for peace, prosperity and well-being. The festive atmosphere was further enhanced by dazzling lights reflecting the cultural and spiritual significance of the occasion. Ashtami, the 8th day, holds particular importance during the festival, attracting even larger crowds to the rituals. That's a wrap for Inside India. We will be right back after a while. Stay tuned to CVR English News.